Hello and welcome to Swaraaj IAS Academy. Today we will discuss the mock test number 2 Indian Polity. So let us begin with the question number 1, which reads, consider the following statement with reference to the Vice President of India. The statements are with reference to Vice President of India. Statement 1 reads, he or she is elected by the electoral college consisting of elected and nominated members of both the houses of the parliament. এটি কোয়া হয়েছে so elect from the electoral college consisting of elected and nominated member of both the houses of parliament, which is absolutely right. He or she is removed from the office if both the houses of the parliament pass a resolution for the same with simple majority. See, এই স্টেটমেন্ট এর ফিশি আছে एक्चुअली जो 67 नंबर आर्टिकल हमर अछि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 67 रे रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट विषय लिखा अछि और सेठी क्लियरली मेंशन अछि अकॉर्डिंग टू 67 आर्टिकल 67 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिखा द वाइस प्रेसिडेंट मे remove from the office by the Rajya Sabha passing a resolution with the majority of the member present and voting and agreed by the Lok Sabha. This is a ki sentence likha jay article 67 re, so eta correct hobani statement ta. Third statement likha ache when the vacancy is caused by the expiration of the term of the sitting president, the vice president act as the president of the period until the new president is elected. See, जेतेबेले president को term सरी जाउची expire हे जाउची सेतेबेले vice president सेठी occupy करि परिबेनी. नियम अछि कि president को term expire पूर्वरु vice president को president को election हे जिवो, तो से समय vice president acting president हे परिबे नाही. When a vacancy is going to be caused by the expiration of terms of the sitting of the president, in that case election to fill the vacancy must be held before the expiration of the period of the or term of the president. So until जो पर्यंत हेइनी से पर्यंत ए जो करंट प्रेसिडेंट अछन से ही ताको स्ट्रेच करिवे पोजीशन ताको जो पर्यंत इलेक्शन हेइनी. तो स्टेटमेंट 3 बे एठी रॉन्ग हे जिवो. आंसर हबा हमरो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट 1. अच्छा, in the context of Indian polity, consider the following statement. Statement 1 reads, the principle of liberty, equality and justice are part of trinity of democracy. See, it's about trinity of democracy. It's a conceptual question. Trinity of democracy हम देखिबा एको. Statement 2 reads, without equality, liberty would produce the supremacy of a few over the many, and equality without liberty would kill individual initiative, which is absolutely correct. जदि equality रहिबनी ता liberty कोन करिवो? Supremacy of few over the many. Yes, जदि equality रहिबनी liberty मिल जिवो तो किछि लोक बहुत आगु पळेबे. And when जतले equality without liberty, equality मिलिबो, समस्त एकता मिलिबो किंतु liberty मिलिबनी, ताहले कोन हबो? निजे सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे चांस मिलिबनी. ओके, सब समस्त कोन इक्वल करा हे जिवो, लिबर्टी दिया हबनी कि निजको एक्सप्रेस करिया पय. ओके, जा भीतर टैलेंट अछि से निजको ग्रो ही करि परिबनी. तो सही केस रे हमरा कोन हबे एठी इंडिविजुअल इनिशिएटिव को ये हत्या करिवो. सो एटा एब्सोल्युटली करेक्ट लागु छे. तो ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी रे कोन अछि? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. ओके, द थर्ड वन इज fraternity. Okay, so this statement reads wrong. So statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Answer is D. Next statement, consider the following states. सातटा स्टेट दिया है. How many of the above states are have a bicameral legislature? Bicameral legislature कहाकार अछि? हमें जानि छे 6टा स्टेट र bicameral legislature अछि. 6टा स्टेट कहाकार? बिहार, यूपी. ओके, मन रख मु कहि दिछि बिहार और यूपी पाखापाखी एडजेसेंट स्टेट दिटा. आउ हेले हमर कर्नाटक संगे महाराष्ट्र, ये भी एडजेसेंट स्टेट दिटा. आउ गोटे तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ओके, तो 6टा स्टेट हेले, 6 स्टेट्स मन रहि गेले. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र. 6टा स्टेट. सो एटी कहा का नाही, राजस्थान और ओडिसा रे नाही. 7टा स्टेट दिया छथि. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स बाइकैमरल लेजिस्लेशन? गण देबा आंध्र, बिहार, कर्नाटक,
तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, 5 स्टेट्स, ओके, ओनली 5 स्टेट, आंसर हो ओनली 5। ओडिशा आउ राजस्थान रो बाइकैमरल लेजिस्लेशन नाही, ए दिटार नाही, ओके। Next question, the 11th schedule of the constitution plays which of the following under the preview of panchayats? अच्छा, पंचायत 11th schedule रे कहूची पंचायत कितरा सब्जेक्ट दिया टोटल 29 टा सब्जेक्ट दिया है हला 29, which is very important, सब जगह पढ़े के जीवो 29 subjects are allocated for the पंचायत, ओके। सेठू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अच्छी, फैमिली वेलफेयर अच्छी, रूरल हाउसिंग भी अच्छी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी अच्छी, ओके, चारिटा जगह अच्छी, आंसर हबो ऑप्शन डी, ओके, आंसर हबो ऑप्शन डी। लेट मी वेरीफाई आल्सो, ओके। देखो लैंड इंप्रूवमेंट और लैंड रिफॉर्म अच्छी, माइनर इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट अच्छी, एनिमल हस्बेंड्री एटा भी इंक्लूड अच्छी सेतिरे, फिशरी भी अच्छी ग्राम पंचायत लिस्ट रे, जो 29 टा अछि लिस्ट सेगुडा को गोटे रीड कर दोछि। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अच्छी जोटा के एठी मेंशन अच्छी, ओके। सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री भी अच्छी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ओके, इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दैट इज आल्सो देयर, खदी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री इज आल्सो देयर, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, fuel and fodders, roads, culverts, bridges, ferries, waterways and other means of communication are also there. मन रखी दियो जदि मन रखी पड़जो जदि हबो लिखि दियो, okay। Rural electrification including the distribution of electricity is also there. Non-conventional energy sources, yes, it is also present. Poverty alleviation program, education including primary and secondary schools, technical training and vocational educations, so all are the part of a rural subject अच्छी our panchayat raj under अच्छी। Thus the technical training and vocational education is also included, adult and non-formal education is also included, libraries is there, cultural activities, market and fairs, health and sanitation including hospital, primary health care centers, dispensaries are all the parts of your panchayat raj initiatives. However, I have little doubt on this. Okay. Next question is all correct of answer. Okay. Next question, which of the following bill does not lapse when Lok Sabha is dissolved? Good question. Lok Sabha जब dissolve हो जाउची bill रो को state थिबा दरकार so that से lapse हबनी कोन पचे does not lapse, okay, does not को bill टे lapse हबनी आ कोटा lapse हे जो जानिया दरकार, okay। A bill originated in and pending in Lok Sabha, ये तो lapse हे जिवो काहे ना लोक सभा ही जेतो dissolve हे गेला ये रही कोन करिवो गोटे bill टा लोकसभा रे ओरिजिनेट हेतिला सेठी पेंडिंग हे अछि तो सेटा लैप्स हे जिवो, डज नॉट लैप्स पचार आंसर, सो ये तो लैप्स हे जिवो, एटा काटि देबा। ए बिल ओरिजिनेटेड इन एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, अच्छा राज्यसभा रे ओरिजिनेट हेछि, राज्यसभा पेंडिंग अछि, लोकसभा से तो किछि एपर्यंत लेना देना हेइनी, ओके, सो ये लैप्स हबो नाही, ओके। ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, एटा लैप्स हे जिवो काहे कि ना जो प्रीवियस लोकसभा तक पास करथले वर्तमान लोकसभा तक पास करिवो कि न करिवो सेटा डाउट अछि, तो एटा भी हां लैप्स हे जिवो। ए बिल पास्ड इन राज्यसभा बट पेंडिंग इन लोकसभा, पेंडिंग इन लोकसभा प्रीवियस लोकसभा रे एटा पेंडिंग थिला वर्तमान लोकसभा तक पास करिवो कि न करिवो सेटा भी वर्तमान लैप्स हे जिवो, सो आंसर विल बी योर बी, ओके, आंसर विल बी बी। Which, with reference to the parliamentary forum in India, consider the following statement. Parliamentary forum विषय question टा अछि, the first parliamentary forum on water conservation and management constituted in 2005, याकु देखिबा ठीक अछि कि नाही, ओके। सेकंड स्टेटमेंट को the speaker of Lok Sabha is the ex officio president of all the forums कहला हला टिके डाउट लागु छै, याकु भी पेंडिंग रखिबा। The duration of the office of the member of the forum is co-terminus with the membership of the respective house, yes, जो पर्यंत से माने हाउस रे मेंबर अछंती से पर्यंत से माने पार्लियामेंट्री फोरम रो भी रहिबे बोली कहूची, सो या आंसर कोन हो एठी, ये तो बिल्कुल ठीक अछि हमरो कि वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 2005 व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्स ऑफिशियो प्रेजेंट ऑल द forums, say all the forums have been
रादर किंतु मैक्सिमम जति फोरम्स अछन तार चेयरमैन से निजे हेबे बट गोटे फोरम तंग रही जाउची कि फोरम ऑन पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक ए जो ये रो से हेबेनी चेयरमैन ओके बाकी सब से चेयरमैन हेबे तो थर्ड स्टेटमेंट कहूची तो स्टेटमेंट टू टाइट रॉन्ग हे हला ऑल कहची एटा रॉन्ग हे द ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द फोरम को टर्मिनेट्स विथ द मेंबर ऑफ द जो पर्यंत से मेंबर अछन से पर्यंत ड्यूरेशन टा रहइबो आंसर हबो व्हिच इज द करेक्ट पचार 1 एंड 3 होची आंसर करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फोरम अगेन पार्लियामेंट्री फोरम ऊपर each forum consists of members of Lok Sabha as well as Rajya Sabha ठीक लागुचे the member of forum are nominated by speaker or chairman of the house members को के nominate करते जे हाउस रे चेयरमैन और स्पीकर से नॉमिनेट करंती ए जगह रे मते लागुची बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट your answer is C this is a factual statement आपको पढ़िया पे पार्लियामेंट्री फोरम रो तुम डिटेल पढ़ले जान परिबो which of the following has the authority to declare an area as a scheduled area गोटे एरिया को शेड्यूल्ड एरिया के डिक्लेयर करंती এটা डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन ए क्वेश्चन आसीची आगुरु होला यूपीएससी रे भी गोटे स्टेटमेंट से ए क्वेश्चन आसीची बहुत थर आसीची थरे न आ ओपीएससी रे भी आसीची तो आंसर होची द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कोन डिक्लेयर करंती गोटे एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बोली से डिक्लेयर करंती ओके अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ओके एटा कोटे छे हमरो फिफ्थ शेड्यूल रे केतरा स्टेट अछंती 10 स्टेट्स अछंती ओके 10 स्टेट इंक्लूडिंग ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ ओके ए स्टेट सब अछंती क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा व्हिच रेफर विथ रेफरेंस टू द पासिंग ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विषय रे पचरा है कंसीडर द फॉलोइंग प्री कंडीशन अबाउट द कट मोशन विषय रे पचरा है कट मोशन में किछरा प्री कंडीशंस थाए सेथुरु कोन हाउ मेनी ऑफ द अबव कंडीशंस आर करेक्ट इट शुड रेज ए क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इट शुड नॉट रिलेट टू मैटर that is under adjudication by the court it should relate to one demand only it should not make suggestion for the amendment or repeal of existing law how many of the above conditions are correct see ei jaga re ठीक है हमें देखिबा जो कंडीशन गुडा अछि it should not raise a question of privilege which is not it should कहि ना it should not हो हैला आंसर it should not raise a question टेस्ट कर दे टिके बोले दी चला इट शुड नॉट रिलेट टू द मैटर दैट इज अंडर एडजुडिकेशन व्हिच इज एक्चुअली एब्सोल्युटली करेक्ट एडजुडिकेटेड मैटर गुडा को ये कोन कट मोशन हमें करि परिबानी इट शुड रिलेट टू वन डिमांड ओनली यस इटा का संगे गोटे ही डिमांड करि परिबो इट शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड ओके इट शुड नॉट मेक सजेशन फॉर द स्टेटमेंट और रिपेल एग्जिस्टिंग लॉ व्हिच इज आल्सो करेक्ट एटा भी ठीक अछि ओके तीन स्टेटमेंट ठीक अछि आंसर हबो ओनली 3 करेक्ट हबो फर्स्ट ऑफ ऑल कट मोशन कोन जानि पे चाहछ ना कट मोशन पॉलिटिक्स ई सब अछि हमरो टोकन कट पॉलिसी कट इकोनॉमिक कट से सब अछि ओके गोटे बजेट जतले हमरो एस्टिमेशन जतले बजेट रो जतले हमरो कोन गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पाई कि ना कि पर्टिकुलर गोटे ऑब्जेक्टिव पाई कि ना जतले पॉलिसी पाई जतले हमरो एस्टिमेटेड रेवेन्यू एस्टिमेटेड जो बजेट एलोकेशन अधिका हो जाए ताल ताको कट करिया पे पड़े ओके सेते बेले ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ वोटिंग ताको बजेट वोटिंग होय ना से बजेट वोटिंग ऑन ग्रांट ऑन द पैसेज ऑफ द बजेट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स कैन डिस्कस द डिटेल ऑफ द बजेट करंते दे कैन आल्सो मूव मोशन टू रिड्यूस एनी डिमांड डिमांड को रिड्यूस करिया पे गोटे motion pass करंती such motion are called cut motion and they are different type policy cut economic cut token cut all these things so को condition precondition ए जो तीनटा कहली 2 3 4 ए condition सहित it should be clearly expressed and should contain arguments or defamatory statements okay this is a statement it should be confined to one specific matter which is important it should not refer to a matter that is not primarily the concern of the union government primary concern no hitwa darkar
It should not relate to the expenditure charged and consolidated fund of India. That is also a criteria. And lastly, it should not revive discussion on matter on which decision of the has been taken in the same session. सेही सेशन जे डिसाइड करा ताको भी एटी कंसीडर करा जाय पारिबो नाही. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमर पढिबा, which of the following is known as mini parliament of the parliamentary system. मिनी पार्लियामेंट काहू कहा जाउचे, ए जे पार्लियामेंट्री कमिटी को हम मिनी पार्लियामेंट बोली पाउचे. आंसर हम पार्लियामेंट्री कमिटी. देखो पार्लियामेंट रे बहुत सारा बिल्स आसे, बहुत तांकर कोन स्क्रूटिनीज बहुत हुए, से बहुत तांकर हेवी ड्यूटी था. पार्लियामेंट इज टू कम्बरसम एक्चुअली, too cumbersome of a body to appropriately consider the matter brought before it. Okay, तो पार्लियामेंट पाखरे एते समय न थाए, ताको जो मैटर आने पड़े से ताको माने बहुत समय तक ता पाखरे कोन जेहेतु बहुत सी निटिग्रिटीज थाए. पार्लियामेंटरी कमिटी से गुडा को भलसे पढंती, बुझंती, कोडा काटिबार अछि, कोडा जोडीबार अछि, ताको भलसे स्क्रूटिनी करिक ना आगु बढ़ांती. सेते पार्लियामेंटरी जो कमिटी अछि ताको कमिटी भितर देखो नॉलेज भी अछि, एक्सपीरियंस भी अछि, आउ तांकर गोटे एक्सपर्ट टीम्स अछि, आउ तांकर स्पेशलाइज से पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर से स्पेशलाइज थांती. सेते बोली कि ना इट इज एटा दिया हिची पार्लियामेंटरी हमरा कमिटी को. सो आंसर ऑफ पार्लियामेंटरी कमिटी हियर. The next statement reads, next question, with reference to grant made by the parliament, which of the following statement are correct? Again, grant made by the parliament विषय स्टेटमेंट्स को है सप्लीमेंटरी ग्रांट्स आर गिवन व्हेन ए नीड अराइजन फॉर ए न्यू सर्विस नॉट कंटेम्प्लेटेड इन द बजेट, व्हिच रीड्स एक्चुअली जदी बजेट रे जोटा नाही तापर जदी किछि ऐड होचे सप्लीमेंटरी बजेट को कहजिवो और सप्लीमेंटरी ग्रांट. Additional grants is given when the amount authorized by the parliament for a service is found to be insufficient. जेतेबेले गोटे सर्विस पई बजेट सफिशिएंट हेले ताको एडिशनल ग्रांट बोली कहा जाय. Before presenting a budget grant in Lok Sabha for voting, it must be approved by Public Account Committee. This is also a statement. Vote of credit is linked a blank check given in the executive by the Lok Sabha. Vote of credit is like a blank check. Okay, vote of credit is like a blank check given to the executive of the Lok Sabha. So select the correct answer using the code given below. ए जगह रे से कहला ଗୋଟେ ଭଲ क्वेश्चन टे पार्लियामेंटरी ग्रांट विषय रे. ओके, एठी देखो खाली एतिकी जिंस एठी चेंज होची. सप्लीमेंटरी ग्रांट माने हला एठी स्टेटमेंट टिके हमर अल्टरनेट हो जाय. सप्लीमेंटरी ग्रांट होचे हमर जदी इनसफिशिएंट अछि. ओके, when the amount authorized by the parliament for a service found insufficient ताको हम सप्लीमेंटरी ग्रांट कहबा. आ जते बेले हमर has risen the new service not contemplating the budget ताको additional grant कहबा. हला एटा स्टेटमेंट खाली उल्टा हो जाय. एडिशनल ग्रांट रो एठी अछि डेफिनेशन ता. ओके, आ सप्लीमेंटरी ग्रांट रो एठी अछि डेफिनेशन ता. काइना एट नथिला कंटेम्परेरी बजेट एटा नथिला ताको एडिशन करा हैछि. आ सप्लीमेंटरी होछि एक्सेस जतोल हे गेला इनसफिशिएंट दरका तो सप्लीमेंटरी ग्रांट करा होछि. सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 टा हमर इनकरेक्ट हे जाउछि. तो हाउ मेनी द करेक्ट 2 एंड 3. अच्छा एट देखो स्टेटमेंट आज कंफ्यूजन अछि. करेक्ट कोटा आज पचारछि ना, तो सेमति तो स्टेटमेंट एट देखा ही जाउनी. एठी टिके हमर एठी रंग अछि हला, माने जो आंसर कीज रे टिके भूल अछि. एटा काट देबा एठी हला. 3 and 4 are correct. Okay, so excuse me for this one. However, the points are very crucial points. ताको मन रखिया पे पड़िबो. Moving on to the next question, consider the following chairman of Niti Aayog, Supreme Commander of Defence Forces, chairman of Interstate Council. How many of the above are the role of Prime Minister of India? अच्छा, Prime Minister कौन को position held करिसंती. Chairman of the okay, Prime Minister the ex officio chairman of the Niti Aayog, which is correct. Chairman of the Interstate Council is also correct. But Supreme Commander of Defence Forces like Indian Navy, Air Force और Army रो जो Supreme Commander सी होचंती the President of the okay. So only 2 correct. How many? Only 2 answer is only 2. Moving on to the next question. Which of the following are correct with respect to PESA Act 1996? It extends the provision relating to the panchayats to the scheduled areas with certain modifications.
It provides self-rule for the bulk of the tribal population. It facilitates panchayats at the higher level in allocating the power and authority of the panchayats at the lower level. See, it facilitates the panchayat at the higher level in allocating the power and authority of the panchayat at the lower level. एमती तो किसी नता हायर लेवल पंचायत रे पावर दिया जाए कि तोको अथॉरिटी करिया पे तो एई स्टेटमेंट ही मतलब भूल लागुची ठीक सो लेट द करेक्ट एटा मते भूल लागुची तो देखिया both the statement the extend the provision relating to the panchayat and the scheduled areas with certain modification which is correct. It provides self rule for the bulk of the tribal population which is also correct. Okay, pesa 1996 रे आछि हमर एटा ट्राइबल शेड्यूल्ड एरियाज पे आछि जो पंचायत इन द शेड्यूल्ड एरियाज से एरिया पे आछि both the statements are correct but ए स्टेटमेंट एठी wrong अछि तो आंसर हो हमर 1 and 2 only. Okay, next question, with reference to the impeachment of the president of India, consider the following statement: the ground of impeachment of the president is the violation of the constitution. Yes, violation of the constitution is a ground of impeachment. It is statement that is passive type of it's correct. The impeachment charges can be initiated only in Lok Sabha. No such criteria is there or not such mandate. Both house the no wrong. Okay, the nominated members of the Lok Sabha do not participate in the impeachment of the president. एटा तो ठीक लागुଛି मते बिल्कुल ठीक हेतिबो एटा ओके तो प्रेसिडेंट करो जतबेले हमर impeachment हुए इलेक्शन बेले तो नॉमिनेटेड थांती किंतु impeachment बेले था कि नहीं एटा गोटे क्वेश्चन त पार्टिसिपेट करंती हला डू नॉट पार्टिसिपेट तो रॉन्ग हो तो ओनली वन इज करेक्ट. Global sea level rise implications report published by which of the following organization? Okay, global sea level rise ये गोटे ऑर्गेनाइज रिसेंटली आसथिला रिसेंट माने करंटली न्यूज रे रहूची एटा कहा हिची कि बांग्लादेश पाकिस्तान और इंडिया वल्नरेबल स्टेज रे अछंती सी लेवल राइज जतले ही जाय तो एई कंट्री गुडा का सबसे अधिक वल्नरेबल रहिबे सो या आंसर की रिपोर्ट देची वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द बॉडी. Which of the following is incorrect with respect to Indian judiciary? Indian judiciary को नेगी कोटा incorrect अच्छे. The single system of court was adopted by Government of India Act 1935, which seems to be correct. देखिए आपको the Supreme Court is a federal court and guardian of the Constitution, which seems to be correct. The Indian legal system derives the authority from the Constitution, which seems to be correct. The concept of judicial review has been borrowed from the Irish Constitution. ना Irish तो नथिला. Judicial review है USA. Okay, USA रो ना है. तो which of the following is incorrect पता है incorrect कोटा D टा incorrect बाकी सब ठीक अछि. Okay, तो your answer is D. hang ହେଇଗଲା ଟିକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରିବେ. ସୋ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ ଏଇଠି ଥିଲେ ନା ସୋ
नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ला हमर एटा तो डिस्कस होई छी ना एटा डिस्कस होई छला तो आंसर होबा आपन डी ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following qualification of a person to be chosen as a member of state legislature. He must be a citizen of India. Yes, absolutely correct. He must make and subscribe to the oath and affirmation before the person authorized by the election commission. Yes. He must be member of scheduled caste and scheduled tribe if he wants to contest a seat reserved for them. Yes. A person to be elected in the legislative assembly must be an elector of the assembly constituency in the concerned state. देख जदि जड़े गोटे कन्स्टिट्यूएंसी ठिया चाहूँ ताहले जरूरी नुहे कि से कन्स्टिट्यूएंसी रहिथिबो तो एटा रॉन्ग हे जिवो हाउ मेनी ऑफ द अबव क्वालिफिकेशन आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओके 3 आर मेंशन हाउएवर एटा टिके मन रखिबो जदि जने पर्सन एससी और एसटी रो बिलोंग करे से अनरिजर्व सीट पय मध्ये लड़ी पारिबो जरूरी नै केवल रिजर्व सीट लड़िबो अनरिजर्व सीट पय भी लड़ी पारिबो ओके सो इट इज करेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग अच्छा moving on to the next question with reference to quick reaction surface to air QRSAM consider the following statement it's a missile okay quick reaction surface to air missile it is a long range surface to air missile system designed to protect moving armored column from air attacks the second statement is it is a single stage solid fuel propelled missile okay first of all it's not a long range okay it's not a long range surface to air missile it's a short range okay surface to air missile system designated to protect moving armored columns from aerial attacks एटा कोन सरफेस छड़ाबो पर ऊपर छड़ाबो बट इट्स नॉट लॉन्ग रेंज पाखा भाई कि उडुची एरियल अटैक होची ताको से डिस्ट्रॉय करि परिबो this entire weapon system is configured on highly mobile platforms and is capable of providing air defense on move. QRSM weapon system is being inducted in the Indian Army. Statement 2 absolutely correct. It is a canister based system which means it is stored and operated from specifically designed compartments. The system is capable of detecting and tracking targets on the move and engaging targets with short halts. It used the single stage solid fuel propels which is written here and propels missile and has a mid-course inertial navigation system with a two-way data link and terminal active seeker development by developed by DRDO. So statement 2 टा correct अच्छी statement 1 टा हमरो wrong अच्छी answer will be only 2 see एटा हम पढ़ी देली पूरा exactly याको नेकी ठीक है मैं स्लो पॉज करके ना निजे नोट भी करते परिबो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेटा करंट अफेयर क्वेश्चन थिला पॉलिटी नथिला एटा होची विथ रेफरेंस टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस बाय द इलेक्शन कमीशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट The Model Code of Conduct prohibits all union ministers from combining official visit with the electioneering work. No payment for completed work can be made at time of MCC in force. No payment on the completed work. Completed work ही परिवहन वाली कोच है. और all finance, all union ministers वाली कोच है. The model code of conduct is enforced from the date of announcement of election schedule by the election commission. एटा तो बिल्कुल ठीक अछि खाली एटी all union minister लिखा अछि एटा exclude है prime minister okay prime minister exclude होछन सेतमे स्टेटमेंट रॉन्ग हे जिवो no payment of completed work पे काई पेमेंट में ब्लॉक हो तो एटा भी रॉन्ग हे जिवो only one गोटे स्टेटमेंट ठीक अछि हमर हबो which of the above is or are correct statement 3 is only correct so answer C. The next question is with reference to the Finance Commission, consider the following statement. The Constitution of India has empowered the President to lay down the qualification of the members of the Constitution of the
Finance Commission. The 15th Finance Commission did not take the census data 2001 for determining the divisible pool of between center and state. The 14th Finance Commission added forest and ecology and tax collection effort to the criteria of devolution of fund. By the way, a forest and ecology ta thila amara 15th Finance Commission ro. Okay, eta 15th Finance Commission ro 14th Finance Commission no. So, ei statement ta bhuli jibo. The 15th Commission did not take census data 2000. Yes, बिल्कुल correct. ये 2011 रे census data नहीं थिला. Okay, 2011. वर्तमान फाइनेंस कमिशन 16th फाइनेंस कमिशन वर्तमान फॉर्म हेछि जे कि अक्टोबर लास्ट 2025 रे याको रिपोर्ट आसी जीवो आ ये को पर्यंत याको रिकमेंडेशन रहिबो 2025 2026 रु याको रिपोर्ट 5 वर्ष पर्यंत लास्टिंग हेकि रहिबो. ओके, 16th फाइनेंस कमिशन रो तो एटा फाइनेंस कमिशन 15th विषय दिया है तो स्टेटमेंट 2 इट करेक्ट अछि. ये 2011 रे सेंसस को कंसीडर करथिले और स्टेटमेंट 3 टा हमर एठी रॉन्ग हे होछि बिकॉज़ ये कोन ये होचंदी हमर 15th फाइनेंस कमिशन गर ए रिकमेंडेशन थिला. ओके, बाय द वे द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द पार्लियामेंट The Constitution of India provide the Finance Commission is a quasi judicial body हम जानछन. ओके, आर्टिकल 280 हिसाब रे एटा हम पढिबा पढिथिले हम क्लास रे हम जतल होछि सेठी the constitution empower the parliament not the president. Okay, here टिके एठी हम अछि the president हिछि एठी हो parliament बाकी सब ठीक अछि बट ए टिके ट्विस्ट कर दिए तो पॉलिटी रे क्वेश्चन गुडा को एमते टिके वर्ड रे टिके प्ले करे हैला तो हमर एठी कोन हबो आंसर 2 ओनली 2 होछि करेक्ट आंसर. With reference to the office of the governor of India, consider the following statement. Governor विषय पचारे office of the governor विषय statement 1 reads the constitution prohibits a person to be appointed as governor of state if he belongs to the same state. Constitution provide करिছে कि सेमती constitution किछि लिखाइ नै एटा सरकारिया कमिशन रिकमेंडेशन थिला. Okay, it was a recommendation of a सरकारिया कमिशन 1983 रे हितिला. The report ता 3-4 वर्ष परे आस्तिला not constitution, so it is wrong here. Next, the governor has the situational discretion in recommending the imposition of president's rule in the state. अच्छा, situational discretionary power होचे but recommending the president rule टा एटा constitutional discretion not situational discretion. एटा constitutional टिके वर्ड प्ले करछि गोटे जगह रे चेंज कर दोछि बाकी सब स्टेटमेंट ठीक थाउछि किंतु गोटे जगह रे से चेंज कर दोछि तो इट्स ए constitutional discretion. Situational discretion कोन जो जगह रे जदी सपोज इलेक्शन परे काहा को से चीफ मिनिस्टर पे नॉमिनेट करिवे सेटा तांको सिचुएशनल डिस्कशन जाउछि. 42nd constitutional amendment act made the ministerial advice binding on the governor. No, binding on the president हला एटा होछि सेंट्रल गवर्नमेंट पे थिले माने स्टेट रे एंट्री किछ नथिला. ओके, 42nd amendment ठीक अछि बाकी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. ओके, पार्लियामेंट जो लोकसभा किंबा मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जहां भी कहउछन दैट शुड बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ. सो एटा भी रॉन्ग ही जिवो. देखो गोटे गोटे जगह रे खाली चेंज करछ. द गवर्नर कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट टू मीट द अनफोर्सन एक्सपेंडिचर. एटा मते ठीक लागुछि. ओके, बट द गवर्नर कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट द अनफोर्सन एक्सपेंडिचर ए स्टेटमेंट टिक के फिशी अछि देखिबा. देखो टिक खाली चेंज द गवर्नर कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू मीट एनी अनफोर्चुनेट एक्सपेंडिचर. एटा तो ठीक लागुछि बट प्रॉब्लम होछि सेंती कि ऑप्शन नाही एठी. ए स्टेटमेंट ठीक अछि हैला. सो एठी हबो गोटे स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 ओनली गोटे ऑप्शन हबो. ओके,
सो इटा ऑल नहीं 1 2 एंड 3 हो आंसर 1 2 एंड 3 ओके गोटे चेंज करबो 1 2 3 करेक्ट incorrect चलछि सो 1 2 3 incorrect 4 टा होछि करेक्ट moving on to the next question with reference to the state legislature consider the following statement the maximum and minimum strength of for all the state legislative assemblies are fixed at 560 अच्छा maximum 500 members और minimum टा 60 members कहिछि बट अरुणाचल प्रदेश मिजोराम नागालैंड ये सब तो 60 मेंबर भी नहांती 30 टा 20 टा 40 टा लेखा मेंबर अछंती तो टिके दे एटा कॉमन सेंस लगेबो ना स्टेटमेंट इजीली तुम टर्मिनेट कर दी परिबो एटा रॉन्ग अछि the deadlock between two houses of the state legislature over the passage of a bill is resolved through mechanism of joint sitting एटा स्टेट लेजिस्लेचर विषय पचारछि ओके स्टेट लेजिस्लेचर जेहेतु एटा हमर पार्लियामेंट भितर अछि एटा स्टेट लेजिस्लेचर विषय एंति किछि नाही ओके स्टेट लेजिस्लेचर रे असेंबली जहा कोए सेटा फाइनल हुए जो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल हाथ रे खाली एति पावर कि 4 मास पर्यंत से होल्ड करि परिबो नहले सेटा पास ऑटोमेटिक जेन मनी बिल पास जाय पास हे जिवो सो एटा हबनी देखो सेंटेंस पूरा पढो स्टेट लेजिस्लेचर लिखाइ छै लोकसभा आइथिले ठीक है जानता द privilege of the state legislature do not extend to the governor which of the above is correct এটা करेक्ट अछि only 3 okay governor नहीं privilege का दिया अछि member of the assembly with reference to the public interest litigation consider the following statement PIL को नहीं अछि public interest litigation को नहीं क्वेश्चन ता अछि the concept of PIL has not been defined in the constitution Indian statute हाँ ये तो ठीक लागु मते एटा कोड डिफाइन तो है ही नहीं the PIL litigation is undertaken for redressing public injury and adjudication of individual right देखो public interest litigation ता individual right कहीं करियो या public rights okay so एटा wrong है petitions or letters against the police for refusing to register a case will be considered as PIL है परियो a PIL can be filed before Supreme Court and High Court only okay Supreme Court और High Court रे केवल PIL देई हेबो आ कोर्ट दियाई हेबनी तो एटा होची कंफ्यूजन अछि हला which is absolutely correct okay article 32 of the Indian constitution or any high court or supreme court under article 226 under एटा हमर अछि तो एटा भी करेक्ट हे जिवो तो आंसर कोड करेक्ट हबो only 3 statement correct हेबो बोध लागु जा मते yes only 3 statement एटी correct हबो moving on to the next question consider the following pairs with reference to the pardoning power of the president of India president को pardoning power विषय पचार छी types of pardoning and effect on convicts commutation माने कोन हायर फॉर्म को लोअर फॉर्म रे कन्वर्ट कर देबा और तार नेचर ऑफ द पनिशमेंट को भी चेंज कर देबा कम्यूटेशन सेटा नेचर ऑफ द पनिशमेंट को चेंज कर देबा होछ हमर कम्यूटेशन तो इफेक्ट ऑन गिविंग टाइम टू ए पर्सन सेंटेंस टू डेथ सेंटेंस टू सीक पार्डन फॉर द प्रेसिडेंट ना एटा तो हम रिप्राइव हे जिवो ना सो एटा रिप्राइव हे जिवो एटा हबनी रेमिशन reduce the time period of the sentence from 2 to 1 year ये रेमिट करिवो जदी टाइम पीरियड अधिक आछि त कम कर दी परिवो थ्रू रिमिटेशन दिस इज करेक्ट पार्डनिंग तुम जदी पढियो ऑफ द प्रेसिडेंट सेठी अछि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट रे एटा डिटेल अछि रिप्राइव रिप्लेसेस द कैपिटल पनिशमेंट विथ रिगोरस इम्प्रिजमेंट एटा कम्यूटेशन हे गला देखो एटी कैपिटल पनिशमेंट थिला कैपिटल पनिशमेंट को इम्प्रिजमेंट कर देले तो एटी चेंज द नेचर ऑफ द पनिशमेंट चेंज कर दे एटा कम्यूटेशन हे गला आउट रिस्पाइट अछि higher form to lighter form in special cases like जदि प्रेग्नेंट अछंती जने किबा स्पेशली एबल्ड अछंती ताले सेही केस रे कोन रिस्पाइट हे जिवो ओके रिप्राइव रिस्पाइट रेमिटन कमीशन आउट पार्डनिंग पावर डेथ सेंटेंस को सेठी पार्डन करिवे दैट इज पार्डनिंग पावर सो एठी केवल गोटे सेंटेंस ही ठीक अछि गोटे ही हमरो ऑप्शन ठीक अछि दैट ओनली वन हबो एठी आंसर which of the following is or are necessary for the recognition of political party as a national party what a political party को national party हवा पई कोन क्राइटेरिया दरकार that is also important if a political party is recognized as a state party in 4 states yes it's a valid statement
if a political party wins 2% of the, yes এটা ঠিক আছে, of the Lok Sabha, it is general election and winning candidates from the party are elected from two states no 3 states. Okay, so যেহেতু অধা স্টেটমেন্ট ঠিক আছে আর অধা ভুল আছে, এটা ভুলে যাব। If a political party secure 1% of valid votes in the last 3 consecutive elections, Lok Sabha election এমতি তো কিছু ନାହିଁ, এটাই রং হয়ে যাব। ওকে, only one correct হচ্ছে, only one ন্যাশনাল পার্টি হওয়া পাই। দেখো তোমাকে কোন না মিনিমাম 4% মিনিমাম 2% সিট দরকার, উইনিং সিট দরকার from 3 states, from 3 states। ওকে, ଆଉ 6% of the valid vote polled সেটা भी দরকার total। so there are various your criteria are there। next question पढ़िबा। consider the following statement with reference to the composite floor test in the legislative assembly। floor test माने कोन, कहार मेजॉरिटी अछि, it is conducted only when the when more than one person stakes a claim to form a government, এটা ঠিক লাগুছি। the majority is counted based on the those present in voting। in case there is a tie in number of voters, the speaker can cast his vote, এটা তো ঠিক আছে। See, first of all, the statement 1 is correct। composite floor test is conducted only when more than one person stakes a claim to form a government। when the majority is not clear, the governor might call for a special session to see who has the majority। okay, statement 2 koche, the majority is counted based on those present voting। this can also be done through a voice vote where the member can respond orally or through division voting। some legislator may be absent or choose not to vote, this is also correct। statement 3 goes, following the vote, the person who has the majority will be able to form the government। in case there is a tie, the speaker can cast his vote। third भी ठीक अच्छे बिल्कुल। तो ये हमर ऑप्शन हमर कोन हे जो स्टेटमेंट जो हमर ऑप्शन 3 होच करेक्ट, all the statements are correct। moving on to the next question। again, consider the following pairs with reference to high courts। cases गुडा दिया है jurisdiction। okay, अच्छा, high court और jurisdiction विषय कथबार्ता है। violation of fundamental rights of the citizen is writ jurisdiction, it's a writ jurisdiction। okay, article 226 high court और supreme court article 32। okay, confirming the death sentence to a criminal passed by session। अच्छा, गोटे सेशन जज एटा को गोटे सेंटेंस डेथ सेंटेंस एटा खाली गोटे केस दिया है। एक्चुअली ताको ब्रॉडली जो देखिबा, जदि सेशन कोर्ट रे जदि किछ गोटे जजमेंट दिया है ताको जदि हमको हायर कोर्ट को जाके अपील करबा तो अपीलेट जुरिसडिक्शन बोली कहा जाय। ओके, punishing a person for scandalizing its authority, एटा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हबो। सो इट सब जाको स्टेटमेंट रॉन्ग अछि, इनकरेक्टली मैच्ड, ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ओके, ये गोटे स्टेटमेंट दिया है in this context which of the following cut motion best applies the above situation। कट मोशन तीन प्रकार अछि जेम कहितली, तो से भितर ए जो टाइप्स ऑफ कट मोशंस को टाइप रो कट मोशन अछि स्टेटमेंट ता। the statement reads, in a budget session of the Indian Parliament, a member of Lok Sabha, based on the report of the departmental standing committee, feels that the demand made by the health ministry for its flagship health insurance scheme is very high। okay, the member feels that the ministry might not be able to fully utilize the money in the whole year and hence the demand should be reduced to a specific amount। जदि डिमांड टा गोटे स्पेसिफिक अमाउंट को रिड्यूस हो जाउची, सेटा को टाइप रो कट, सेटा होची इकोनॉमिक कट। ओके, इकोनॉमिक कट। जदि डिमांड टा पूरा ही 1 रुपीस हो जाउची, सेटा पॉलिसी
कट हे जीवो ए देखो सब कट गुडा मु पढ़ी दउछि तुम सुन दियो the policy cut represents the disapproval of the policy पर disapproval हे गला तो whole demand ता reduced to 1 rupees को whereas the token cut इटे कोन हबो aim to amount the demand to reduce to 100 rupees in order to publicize the specific grievance okay तो ए जगह रे 100 rupees हे जीवो आउ पॉलिसी कट रे 1 rupees हे जीवो पॉलिसी को डिस्कार्ड कला बळे एडे हे जीवो ओके बाकी इकोनॉमिक कट कोन गोटे स्पेसिफिक अमाउंट हबो एटा रहिबो किंतु पॉलिसीटा किंतु अमाउंट टा टिके स्पेसिफिक गोटे इकोनॉमिक अमाउंट एटी धार्य करा जिवो which of the following section of the Indian society are entitled to receive free legal service under the legal service authority nalsa under a free legal service avail ko man kari paribe women and children senior citizens industrial workmen economic weaker section victim of ethnic violence see violence disaster ए victim मान तो avail करि परिबे ओके इंडस्ट्रियल वर्कर मान करि परिबे वुमेन एंड चिल्ड्रन करि परिबे सीनियर सिटीजन जल्दी तांक पाखरे बहुत पैसा अछि त काहे फ्री सर्विस काहे दिया जिवो तो ये एठु एलिमिनेट हे जिवे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रखाई नहीं एससी एसटी को रखाई छे तो ए दुटा एठु एलिमिनेट करो बाकी पर्सन जो डिसेबिलिटी समान को भी एठु इंक्लूड करा छै के ना जो फ्री लीगल सर्विस का को दिया छै वुमेन चिल्ड्रन इंडस्ट्रियल वर्कमैन विक्टिम ऑफ वायलेंस ए समस्त को एठी तो आंसर बी हे जिवो याको सहित आउ का को देख देबा टी हमें member of scheduled caste scheduled tribe मान भी एठी हमर दिया छै next statement reads with reference to member of parliament of India consider the following statement the provision for nomination of member of the Rajya Sabha is borrowed from the constitution of USA it is Irish constitution okay the constitution prescribes the election of members from the union territory to the Lok Sabha by direct election prescribe the election of members from the union territory to the Lok Sabha by direct election constitution as a constitution किसी prescribe तो कला वाला लागू नहीं देखिए the election to the Rajya Sabha follows a system of proportional representation by means of single transferable vote एटा बिल्कुल करेक्ट अछि खाली स्टेटमेंट 2 रे देखिबा फर्स्ट अभी तो भूल अछि स्टेटमेंट 2 टा होछि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब करिन ता गोटे एक्ट आस्थिला हमरो यूनियन टेरिटरी पय ना आर्टिकल 80 of the constitution the Rajya Sabha is composed of not more than 250 members of whom 12 are nominated by the president this provision is okay brought from Irish constitution not USA as I said statement 2 रे सही आर्टिकल 81 क्लॉज 1 रे अछि member of the represent of union territories are chosen as such manner as prescribed in the parliament of the India parliament जे प्रिस्क्राइब करियो ता अनुसार मेंबर सिलेक्ट हबो तापर गोटे एक्ट आस्थिला हमरो 1965 रे यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965 यूनियन टेरिटरी एक्ट 1965 अंडर रे हमर मेंशन अछि ए जिंसटा जहा दिहाई कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नै कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि कोन आर्टिकल 81 रे कहै छै आज प्रिस्क्राइब द पार्लियामेंट बट पार्लियामेंट रे गोटे एक्ट स्टैट्यूटरी पास है स्टैट्यूट पास है जेटा कि 1965 रे सेठी लिखाई छै कि डायरेक्ट इलेक्शन हबा दरकार सो सेति में ए स्टेटमेंट हमरो एठी रॉन्ग हे जाउ छै बुझि परल ना आउथर कहबी एठी एटा कहौ छै कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन 80 क्लॉज आर्टिकल 80 क्लॉज 1 रे कहै छै कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी as prescribed by the parliament of the India parliament जेमि चाहिबो करि परिबो आ parliament कहि छै 1965 रे यूनियन टेरिटरी एक्ट रे
कि ए डायरेक्ट इलेक्शन हबो बोली ना सो इट डिराइव्ड फ्रॉम द स्टैट्यूट ओके नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली तो एठी बी हबो ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statement appropriately describe the federation conceptual question federation माने कोन statement 1 reads it is the fusion of power between center and state no it's not a fusion it's a separation okay it's a division it is a separation of power between center and state ठीक लागु तो आको होल्ड कर रखिया it is a division of power between center and state एटा भी ठीक लागु होल्ड कर रखिया it is a devolution of power between devolution तो decentralization गेला ना या माने होची decentralization okay devolution एटा तो हबनी स्टेटमेंट 1 2 1 भी हबनी 2 सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर्स सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल ठीक माने नॉट एब्सोल्युटली राइट डिवीजन ऑफ पावर होची पूरा करेक्ट ओके स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट with reference to the concept of secularism consider the following statement secularism is required it is the term was adopted added in the preamble in the 44th constitutional amendment act मते जहा जहा एटा 42nd amendment act रे secularism ओना हेतिला हमर preamble रे एटा ऐड करा हेची secular with the people of India have been solemnly resolved constitute India as a sovereign socialist secular democratic republic तो एटी सोशलिस्ट और सेक्युलर दुईटा वर्ड एठी ऐड करा हेतिला ओके प्लस इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन प्रीएम्बल रे ए तीनटा वर्ड ऐड करा हेतिला इन द 42nd अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द नेगेटिव कांसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द पॉजिटिव कांसेप्ट माने कोन सब धर्म को हमें इक्वल रिस्पेक्ट करू समस्त को हमें वेलकम करू काहा को हमें डिस्क्रिमिनेट करू ना तो एटा भी भूल जीवो द सेक्युलर negative no positive okay the secular state allows equal disrespect to some aspect of organized religion ha ama secular ko hai chi ki allows equal respect for all the religion but kichita religion ro kichita organized secular ache jako negative aspect uda ko taku ame equally disrespect bi करू तो एटा बिल्कुल करेक्ट अछि ओके ए थर्ड स्टेटमेंट मुझे डिटेल पढिबी थर्ड स्टेटमेंट एक्जेक्टली एमती हबो the secular state does not have the has to treat every aspect of every religion with equal respect it allows equal disrespect for some aspect of organized religion मानकर किछि aspect को equal disrespect भी हमें करू moving on to the next अच्छा ए कोन होछ आंसर कोन हबो इनकरेक्ट पचार 1 and 2 are incorrect okay which of the following committees Balwant Rai Mehta committee Ashok Mehta PK Thangan Punchi commission which how many of the above are related to the panchayati raj को समस्त जानथिबो बलवंत राय तो रिलेट करते अशोक मेहता भी करते पीके थंगम ने कहते पुंची कमिशन जो सेंट्रल स्टेट इलेक्शन से भी इनडायरेक्टली तो डायरेक्टली हमरो पंचायत राज पई समस्त रिकमेंडेशन करचंती तो आंसर हो ऑल 4 हला एडा को तमे छाड़ीबनी सब कमिटी हला रिलेटेड टू पंचायती राज हाउएवर आमे आज इति क्वेश्चन करथिबा देयर आर सम 33 क्वेश्चंस ओके वी विल वाइंड अप द सेशन हियर हम नेक्स्ट सेशन रे बाकी क्वेश्चन गुडा को डिस्कस करिबा सो हैव ए नाइस डे थैंक यू